के बारे में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिकली वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ना दो टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आएंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और दूसरा हमारे पास आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि उस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। उसके अंदर जो है हमारे पास जो रिजल्ट में आती है वेक्टर क्वांटिटी आती है। हमारे पास अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास आएगा एक स्केलर, और अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास आएगा एक वेक्टर। हालांकि ये होती दोनों मतलब प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन मैथ्स में तो प्रोडक्ट का मतलब सिंपल है, डॉट करो क्रॉस करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वेक्टर के अंदर फर्क पड़ता है। वेक्टर अलजेब्रा में फर्क पड़ता है, नॉर्मल अलजेब्रा में फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम लिखते हैं P इक्वल टू ए डॉट बी, और इसे लिखा रहता है ए बी कॉस थीटा। इसका एग्जाम्पल है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो स्केलर है। तो हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, और हम इसको फर्दर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ये तो बन गया इसका फॉर्मूला। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं, ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना बहुत ज्यादा इस पे भाई। हमने यहाँ पर ए से बी की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास ये जो इतना पार्ट आएगा, जो इतना पार्ट हमारे पास आने वाला है, दिस विल बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब एक तरीके से ए वेक्टर की शैडो है ये ऑन बी वेक्टर। सिमिलरली अगर हम यहां से बी वेक्टर से एक प्लॉट करें 90 डिग्री पे, तो इतनी जो लेंथ हमारे पास आने वाली है, दिस विल बी बी कॉस थीटा। अब ये भी क्या है? ये जो बी कॉस थीटा, ये बी वेक्टर की शेडो है ए वेक्टर के अलोंग, ओके। तो जो ए कॉस थीटा है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, एंड बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मैं ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं, मैं इसको बी इंटू ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। यानी मेरे पास क्या आ रहा है? एक वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड आ रहा है और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन आ रही है फर्स्ट के लॉन्ग, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग वन। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग वन, ठीक है जी। अब आई जे के तो हमें पता ही है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट वेक्टर्स को, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को। ए डॉट बी को भी हम ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, बी डॉट ए को बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। अब तुम कहोगे सर वैल्यू तो सेम ही होती है। अब ये तुमको तब पता लगेगा जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट सर्च करोगे या स्टडी करोगे, तब तुमको पता लगेगा कि हर बार सीक्वेंस चेंज करने से वैल्यू सेम नहीं आती। डॉट प्रोडक्ट में सेम आती है बट क्रॉस प्रोडक्ट में सेम नहीं आती। अच्छा, आई डॉट आई, आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos जीरो। आई भी एक्स के लॉन्ग है, ये भी एक्स के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। 1 इंटू वन कॉस जीरो, यानी कि मेरे पास आ गया 1। तो आई डॉट आई सेम तरीके से जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 के इक्वल है। अब अगर हम आई डॉट जे करें तो आई जो है एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो 1 इंटू वन कॉस 90, कॉस 90 तो 0 होता है, यानी कि आई डॉट जे 0 है। सिमिलरली आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट जे और के डॉट आई, ये सब 0 है, ठीक है जी। ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन तो होगा, तो हमारे पास आएगा डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में हमको करना है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमको करना है इसके अंदर एक्चुअल में। तो डॉट प्रोडक्ट जो कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा है,
हमने यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर को डिफाइन कर दिया है, ठीक है जी। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन फॉर्म यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आ रही है, इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इन थ्री डी के अंदर बात कर रहे हैं। अब ये ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। यहां आपके पास जो ए डॉट बी आ रहा है, आपने ए एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई किया, ए वाई जे कैप को तीनों से मल्टीप्लाई किया, ए जेड के कैप को तीनों से मल्टीप्लाई किया। तो ए एक्स कैप को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। सिमिलरली हम ए वाई जे कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए जेड बी जेड जे डॉट के, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास जो चीज आएगी इसके अंदर, दैट इज आपने ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आएगा ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करने पे ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। नाउ वी नो दैट I dot I, J dot J and K dot K is 1. Means this term and this term will be 1. Okay? And we also know that I dot J, J dot I, x axis, y axis, y axis, x axis. 90-degree angle, this will be 0. J dot K dot J, I dot K and K dot I, everything will be 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 term will be 0. Okay? And this term will be 1. Okay? So we write here, we put up the values. A dot B, AX BX plus 0 plus 0, 0 plus AY BY plus 0 and AZ BZ. So what I'm getting here, AX BX, AY BY and AZ BZ. So that is the dot product what I'm getting here. Now let's see how to solve it. How to solve it, let's see that. Let us take that A vector is given as 3i, 2j and 3k cap and B vector is given as this. Okay. Now what happens if I'm multiplying it, what I'll be getting? A dot B. I'll be getting 3 into 4 plus minus 2 into minus 2 plus 3 into minus 1. So 12 plus 4 minus 3. 16 minus 3 become 13 units. So whatever answer we are getting, we get 13 units. We may be asked to find out angle also. If we are asked about angle, find theta between A vector and B vector, then it will be A dot B, AB cos theta. A dot B, we already have 13. And regarding the magnitude of A, we will find 3 square plus 2 square plus 3 square. 3 square, 2 square plus 3 square. Regarding B, 4 square, 2 square and 1 square. 4 square, 2 square plus 1 square. Along with that cos theta. So it will be 9 plus 4 plus 9 means 13 plus 9, that is 22, root 22 if I am not wrong. 9 plus 9, 18, yes, okay. And here 16 plus 5, root 21, cos theta. So it will be
22 into 21, that will be 440 plus 22, yani 462. So root 462 along with here 13 cos theta. So we are in cos theta as 13 by root 462. So we can find out theta by solving it. This was a random question I have taken, but whenever you get the question, so you get the proper answers in the question. Generally, 90% cases mein you get the proper answers. Okay. Now next we have a vector product. So means that now we are done with the cross product, where we are done with the dot product, that we can be find with the dot product only. We can also be asked about the angle only, that we have to find out angle. Okay. Now the next product what we have is the cross product. We have cross product with us. Cross product says that A cross B is a P vector. So P vector is A cross B. That can be written as AB sine theta n cap. And what is this n cap? N cap is a unit vector perpendicular to A vector and perpendicular to B vector. N cap perpendicular to A vector, n cap perpendicular to B vector. Now, how do we represent it? I take the diagrammatic presentation for you so that you understand it. So now I have drawn A vector and I have drawn B vector. I have drawn A vector and I have drawn B vector. Now, if I am writing A cross B, if I'm writing A cross B, it means that the direction of angle will be from A to B. Direction of angle will be from A to B. Okay. So I draw the direction of angle from A to B. This is theta. Now how we have to draw the n cap? Direction of n cap is always by right hand thumb rule. Here we have already taken the topic, so we will explain it again. But it have to be described by right hand thumb rule only. How to use right hand? Keep your right hand. You have already studied in class 10th. This rule you have already studied in class 10th. Keep your right hand like you are doing a thumbs up to someone. Now you have curling of fingers and you have thumb. Okay. So curling of fingers, place the curling of fingers in the direction of angle, curling of fingers. Okay. And thumb will give the direction of n cap. Okay. So if I take right hand, in that case, this is the curling of fingers we have. Okay, this is the curling of fingers we have, and this is the thumb. So thumb gives the direction of n cap. Okay. So in this case, it is a n cap, unit vector perpendicular to A and unit vector perpendicular to B. Unit vector perpendicular to A and unit vector perpendicular to B. In that case, what we have here, we have to draw P vector. This is P vector. This is P vector. This is P vector. Okay. So now P vector is again perpendicular to it. So we have represented P vector as A cross B, and this is P vector. Okay. And P vector, the magnitude of P vector is equal to AB sine theta, and the direction is along n cap. Direction is along n cap. Okay. Do remember this. Okay. So now you also see this. You see this.
So now you have to see it that we have to represent B cross A as a Q vector. So again, I take the same diagram, that is A vector, and this is B vector we have taken. Since it is written B cross A, it means that direction is from B to A. Direction is from B to A. So this will be the direction of theta. This will be the direction of theta. So if I have to draw n cap, this is the direction of theta. If I have to draw n cap, then by right hand thumb rule, in this case, if you draw the right hand thumb rule, okay, so you will keep the right hand thumb rule like this. I try to draw it. Okay, I'm just trying to make you understand about this. Okay, please don't take it wrong. This is the direction. Okay, so you have to keep your right hand in this way, like thumbs down. So this is the curling of fingers. This is curling of fingers, and thumb gives the direction of n cap. Okay, so in that case, you have n cap in downward direction. It is n cap. This n cap is definitely perpendicular. It is perpendicular to both A and B. Now, along with this n cap, only in the direction of n cap, we have q vector. We have q vector in this only. So we can see that if we change the sequence of A cross B and B cross A, the magnitude is not affected, because magnitude of Q is AB sine theta. What is impacted? The direction n cap. Here n cap in upward direction, or here n cap in downward direction. Okay, so we can say that A cross B is equal to negative of B cross A because of direction. Magnitude is same. Okay, and now you have clearly understood how to use the right hand thumb rule. Curling of fingers is in direction of theta, and then thumb gives the direction of P or Q. We have to study the properties of cross product now. Properties of cross product says that magnitude of A cross B is AB sine theta, and this we have already proven right now. A cross A will be AA sine 0, that is 0. Okay. But if it have been dot product, so A dot A will be AA cos 0, that will be A square. Okay. So both products are different. I cross I, J cross J, K cross K, that is 1 into 1 sine 0, that is 0. Now we have I cross J is K cap, J cross K is I cap, K cross I is J cap. How to learn this? There is a small trick to learn this, small trick. And that trick is write I cap, J cap, K cap like you're writing edges of triangle, okay, or vertices of triangle. You have to go in a clockwise manner. If you go in a clockwise manner, the sign will be positive. So I cross J is K, J cross K is I, and K cross I is J. You have to go in a clockwise sequence. And if you go in an anti-clockwise sequence, the answer will be negative. So J cross I will be minus K, and K cross J will be minus I, and I cross K will be minus J. Okay, this rules or these properties you have to remember. If we try to understand the geometrical meaning of cross product, just see here how. Okay, I rub it first of all. These are the two vectors we have taken, A vector, B vector. We have already taken these vectors earlier also in the dot product. Now what we have to take? We draw a perpendicular from here. That will be height, definitely height. And this will be A sine theta. And here if we draw a perpendicular, that will be B sine theta. We can draw a triangle using these two vectors. Okay, we can draw a triangle using these two vectors, and we can also draw a parallelogram using these two vectors.
we can also draw a parallelogram using these two vectors. Okay, do remember it. Now, how to take it? A cross B, the magnitude of A cross B is AB sine theta. That is B into A sine theta. A cross B, AB sine theta. यानी AB sine theta अपने पास आ गया. A into B sine theta. So for this triangle, B is a base. B base है. And A sine theta is height. And for this diagram, A is a base and B sine theta is height. Okay. So base into height क्या होता है? जल्दी बताओ. Base into height क्या होता है? Area of parallelogram होता है. Base into height क्या होता है? Area of parallelogram. And here also area of parallelogram. Now area of parallelogram को 2 into area of triangle भी तो लिख सकते हैं. So it is 2 into area of triangle या 2 into area of triangle. इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है, आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे बताएंगे, तो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो यू गेट द ट्रायंगल. और अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे बताएंगे, तो आपको ए क्रॉस बी करके मैग्नीट्यूड निकाल देना है. दैट इज द पैरेललोग्राम. ओके, so this is the concept of geometrical meaning. So geometrically, magnitude of cross product is equal to the area of parallelogram or twice the area of triangle formed by the two vectors. Understood? Again, just see here, let's see the last statement here. Geometrically, the cross magnitude of cross product is equal to the area of parallelogram and twice the area of triangle formed by two vectors. Understood? Okay. Now cross product in Cartesian form or we can write that in coordinates form. In form of coordinates. Just see here. A vector is written as axi cap plus ayj cap plus azk cap, and B vector is written as bxi cap, byj cap plus bzk cap. For this, A cross B is, you multiply this term with all, ax bx I cross I, ax by I cross j, ax bz I cross k. Ay j cap multiply with this two, ay bx j cross I, ay by j cross j, ay bz j cross k. Az k cap with all, so az bx k cross I, az by k cross j, az bz k cross k. Now by the properties we know that I cross I, j cross j and k cross k is 0. Okay, means this term and this term will be 0. I cross j is k, j cross k is I, j cross k is I, k cross I is j, j cross I is minus k, minus k. Okay, this is k, this will be I, and this will be k cross I is j, k cross j is minus I, so k cross j is minus I, and this I cross k is minus j, so here we get minus j. So we replace these things with these unit vectors and write in the next step. So we have written here a cross b 0, k cap minus j cap, and these we have written. This term and this term have j, this term and this term have I, so we have taken I cap as common. In these two terms, we have taken j cap as common. In these two terms, we have taken k cap as common. Now, how to remember this? It is very difficult to learn this expression, na? Very difficult. So there is a small trick involved.
That is called determinant. Determinant is, I think, in first chapter of class 12th mathematics, CBSE. So A cross B, how to write A cross B? A cross B, first of all, you have to write I cap, J cap, K cap, and above that, you have to write plus, minus, plus. Okay, plus, minus, plus, I cap, J cap, K cap. You have to write AX, AY, AZ, what are the components? Along with the sign, you have to write BX, BY, BZ. One of the strategy, please remember that down minus up. This is not dash, this is subtraction. This is subtraction, down minus up. ये subtraction का sign है, minus का sign है भाई. ये subtraction का sign है, minus का sign है. Down minus up means कैसे? Now how to write मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तब आप ज्यादा आसानी से समझेंगे इसको कैसे लिखना है. देखो, सबसे पहले तो ये जो आपने लिखा है इसकी रेलेवेंस क्या है? You have to write bracket I cap minus bracket J cap प्लस ब्रैकेट K cap. अब जो मैंने आपको कहा डाउन माइनस अप, ठीक है. आई कैप अगर लिखना है तो इसको हाइड कर लो, ये हाइड कर लो. डाउन माइनस अप यानी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है. तो डाउन माइनस अप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है जी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ये जे कैप का फाइंड करना है. सो डाउन माइनस अप यानी ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड. तो डाउन माइनस अप जो फाइंड करना होता है ना उसको हाइड कर लो. ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड. ये के कैप हो गया डाउन माइनस अप यानी डाउन माइनस अप. सो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई. Okay, understood now? This is a small trick to learn these things and please if you follow this तो आप कभी भूलने नहीं वाले ये चीज. आप इसको ट्रिक से ध्यान रखो. देखो फिजिक्स में ना हर चीज लॉजिक से ध्यान रखी जाती है. हर चीज के पीछे लॉजिक है. अगर आप लॉजिक को याद रख पा रहे हैं और लॉजिक को समझ पा रहे हैं तो आपकी ना बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है. अब देखिए जरा ध्यान से. A vector and B vector is written here, so I have to find P vector A cross B. So that will be प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप. मैं इसे रब कर देता हूं ताकि आपको मैं आसानी से लिख के दिखा सकूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है. अब ध्यान दो. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप. अब आई कैप निकालना है ना तो डाउन माइनस अप यानी कि 12 माइनस 12 प्लस 4 आ गया मेरे पास सॉल्व करके. अब मुझे जे कैप चाहिए तो डाउन माइनस अप यानी कि माइनस 8 प्लस 6. अब मुझे के कैप चाहिए तो डाउन माइनस अप यानी कि 4 प्लस 9. ओके, नाउ व्हेन so I get 16 I cap minus 2 plus 2 J cap and this will be plus 13 K cap. Correct? So you get the vector now. Now how to find out magnitude? Magnitude find करना हम ना अभी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं. आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट. तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया रूट 429. दैट विल बी 20.6. दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. डेफिनेटली तो इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट्स होगा. अगर आपको कोई यूनिट नहीं मिल रहा तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, ठीक है. स्क्वायर यूनिट्स दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इसका हाफ कर दो. सिंपल सी बात है. यानी आप जो पी वेक्टर आपने फाइंड किया है इसके मैग्नीट्यूड का अगर आप हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके जी. नाउ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है तो वो हमने निकाल दिया. अब मुझे साइन थीटा निकालने के लिए बोला जा सकता है. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा निकाल लो. वैसे तो एंगल निकालने के लिए ना कॉस थीटा वाली टर्म यूज की जाती है. उसका रीजन आपको बता देता हूं. कॉस थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री में तो पॉजिटिव होता है
और जैसे ही हम 90 से 180 में जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए हम cos थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक पॉजिटिव ही रहती है, ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैंने सॉल्व किया a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास ये आंसर आ रहा है, तो रूट तो 0.94, दिस इज द आंसर। ये दिस वाज द रैंडम क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। इसमें मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, वेक्टर पूछा जा सकता है, आपसे से मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, आपसे एंगल पूछा जा सकता है। ठीक है, एंगल वैसे अगर आए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन अगर मेंशन्ड है ना कि भैया आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके ही बताना है, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने आपको वो बता दिया, और साथ में इसके एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आपको करवाया है इसके अंदर। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। ये प्रोडक्ट के लिए आपका क्लास हो गया। दिस इज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स, दिस इज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स। ओके, बाय फॉर नाउ।